उसके बारे में। See, basically, every single one of us is in a 90-day game plan launch. And at the end of the day, it's very important when we find that new networker, that prospect, we need to guide them with this kind of training. और हम सब 90 डे रन में हैं और 90 डेज कॉल में हैं, और अंत में हमें वो जो हमारे जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, हमें उनको ये गाइड करना पड़ेगा, हमें उनको ये ट्रेन करना पड़ेगा। The most important thing when it comes to network marketing is every single one of us on this call have to act professionally as a network marketer. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है इस 90 डेज रन की कि हमें बहुत प्रोफेशनली एक्ट करना पड़ेगा एज अ नेटवर्क मार्केटिंग। So when someone comes into the business, of course, they will be taught the presentation of PLCU. They will be taught Platin World. They will be taught dashboard. They will be taught how to get their accounts on exchanges. But what about network marketing? जब भी कोई एंटर होंगे उन सभी को सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, प्रेजेंटेशंस बताई जाएंगी उनको, उनको बताया जाएगा कैसे एक्सचेंजेस के बारे में, उनको टेक्निकल चीजें के बारे में बताया जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या। So today's call is really and truly about how to teach someone the principles, the real ethics behind network marketing. और आज हम प्रिंसिपल्स बताएंगे, आपको सिद्धांत बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे क्या है वो सिद्धांत। And there are 3 presentations that we are going to take you through. Today is one, and then of course we have a presentation and training tomorrow, and then finally on Wednesday. और हम लोग 3 सेट ऑफ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, आज और कल, और फाइनल जो होगी वो वेडनेसडे को होगी, बुधवार को होगी। And today's call is about launching your business. So for those of you that have just started the business, I congratulate you. Welcome onto our call. और आज का जो कॉल है वो है बिजनेस के लॉन्च के लिए, और जितने भी लोगों ने आज शुरू किया है और आज इस कॉल पे आए हैं, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं और आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। And of course, those that have been in the business for so many years, I also salute you and I say congratulations, because at the end of the day, you are here, and let us all share, let us all remind each other about what the principles are of network और marketing. जितने लोग सालों से इस बिजनेस में हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, उन सभी को मैं सलाम करता हूं और उन सभी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और आइए सेलिब्रेट करते हैं एक साथ एकजुट होकर। So, ladies and gentlemen, let's get started. This is the launch presentation, how to get started right in the business of Platin World. देवी और सज्जनों, आइए शुरू करते हैं, और ये लॉन्च कॉल है प्लैटिन वर्ल्ड बिजनेस का। And the very first slide that I wanted to present to you guys today is what we call the cash flow quadrant. और सबसे पहली स्लाइड जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। And it's very simple to understand. Any source of income that you bring into your life can be placed into this quadrant. और ये बहुत आसान है समझना, कोई भी इनकम आप अपने जीवन में आकर्षित करते हो वो इस क्वाड्रेंट में प्लेस की जा सकती Either है। you're an employee, you're self-employed, you're a business owner, or you're an investor. आप एम्प्लॉय हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप हो सकते हैं किसी बिजनेस के ओनर हो या आप निवेशक हो। And when we look at the left-hand side of the quadrant where you see the letters E and S, I would like to talk a little bit about this left-hand side. और आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इस क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करेंगे। This left-hand side is in essence where all of us start off in life when it comes to us earning an income. और हम सब यहीं से शुरू करते हैं अपने जीवन में, जब हमें इनकम को शुरू करना होता है। You either start off as an employee, a 9-to-5 job where your boss is telling you how much you are worth every single hour, or you're self-employed, which means you own a job. और यहाँ पे आप एम्प्लॉय होते हैं और एज एम्प्लॉय आप 9 से 5 काम करते हैं, और आपका बॉस आपको बताता है कि आप प्रति घंटे के हिसाब से आपका कितना वेज होता है, आपका कितना पे बनता है। और या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जहां पे आप खुद को जॉब देते हैं।
And this is basically where we get started. So as an employee, you either have a degree or you have someone that is a qualified individual or not. Or if you are self-employed, you also have a degree, like a doctor, like a lawyer, like a nurse, where in essence, how much time you commit to the business is how much you get paid. और एम्प्लॉय के पास एक अच्छी सैलरी होती है, एक अच्छी डिग्री होती है, मास्टर्स होती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड उसके पास भी डिग्री होती है, वो या तो डॉक्टर होता है, या नर्स होता है, या लॉयर होता है, या अकाउंटेंट जैसे पेशेवर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। Now, when we move to the right-hand side of the quadrant where you see the letters, the B and I, let's talk a little bit about the business owner or if you're an investor. और राइट हैंड साइड अगर हम देखें बी और आई को, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर अगर यहाँ पे देखें तो, So when it comes to a business owner, actually you are owning a system that you have created where people are working for you. एज अ बिजनेस ओनर आपने एक सिस्टम क्रिएट किया है जहां पे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। And as an investor, of course, you are investing money, which means money is working for you. और एज ए इन्वेस्टर आप यहाँ पे आप वहां पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा आपके लिए काम करे। And of course, every single one of us, when we look at the left-hand side or the right-hand side, I'm sure all of us agree, we will all want to be on the right-hand side of this quadrant. और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम देखें, हम सभी राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट के हों ऐसा हम सभी इच्छा रखते हैं। But the challenge is, how is it that we all move from the left-hand side to the right-hand side? और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे हम मूव करें लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड तक। Because on the right-hand side, seeing that we all want to be there, we need money. और राइट हैंड साइड में अगर हमें होना है तो हमें पैसे की सख्त जरूरत है। And it's impossible to be in the left-hand side where our time is money while we are in the job. That's when we get paid to actually do something else on the side to make that money so we can move to the right-hand side. और अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो टाइम हमारे लिए पैसा है, और यहाँ से मूव करना ये एक अलग बात है। And this, brothers and sisters, ladies and gentlemen, is why we are here today, to learn about how can we move from the left-hand side to the right-hand side. और भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, हम यहाँ पे इसलिए हैं कि हम सीख सकें कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक में कैसे प्रवेश किया जाए। And guess what? I have the answer for you. और मेरे पास आपके लिए उत्तर है। You know, one of the most famous business coaches in our world today, Robert Kiyosaki, said the following. और सबसे मशहूर बिजनेस कोच रॉबर्ट कियोसाकी ने ये कहा, The richest people in the world build networks whilst everyone else is trained to just look for work. रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं सबसे अमीर लोग दुनिया में नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और बाकी बचे जितने भी हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि उसकी कैसे देखरेख करें। And indirectly, this man is giving us the secret of how to move from the left to the right. और इनडायरेक्टली ये जो व्यक्ति हैं वो हमें ये सीक्रेट बताते हैं कि कैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कर सकते हैं। So the secret to doing this, to traveling from the left to the right, is to understand and become a professional at either network marketing or relationship marketing, which is the same. और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आने के लिए या तो रिलेशनशिप मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, ये दोनों चीज सेम है। You know, with this business, it is so beautiful because we have a very, very small entry point. It's a small capital investment when it comes to, and even in some cases, there's zero capital investment that we have to place into the company. और यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है ये बहुत छोटा है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इस इंडस्ट्री में एंटर करने की वो बहुत छोटी है, बहुत कम है। And of course, it develops us personally. We are growing within this network with courses like this, with training sessions like this. और हम पर्सनली भी बहुत ग्रो करते हैं इन कोर्सेज के साथ, इन ट्रेनिंग्स के साथ।
And when we learn this, we can establish residual leveraged income, which means you don't need to commit your time to earn something. No, you commit your time, you set up a system, and it works for you. और हम यहाँ पे एक टाइम को कमिट करते हैं, रेसिडुअल लेवरेज इनकम में हम एक टाइम को कमिट करते हैं और उसमें हम काम करते हैं और हमें इनकम प्राप्त करते हैं. And the beauty is we can surround ourselves with like-minded, successful people like you see on this call. और हम सराउंड करते हैं अपने इर्द गिर्द लाइक माइंडेड और बहुत सफल लोगों को, जैसे कि आप इस कॉल में अनेक लोगों को देख पाएंगे. I do this as a full-time career, as a professional, and I can assure you the level of freedom that I have achieved, believe me, I want you to achieve the same. और मैं इसे एज अ फुल टाइम करियर करता हूं, और जो फ्रीडम मैंने अचीव की इसके माध्यम से मुझ पे विश्वास कीजिए, आपको भी यही फ्रीडम चाहिए. The kind of freedom I'm talking about is time freedom. It's quality of life freedom. It's money freedom. This is the kind of freedom that we, include Sumit and the top leaders of India, we want for और you. इसमें सबसे पहले समय की आजादी है, धन की आजादी है, आर्थिक स्वतंत्रता है, और सारे टॉप लीडर्स जितने भी हैं जो इस कॉल में भी हैं, वो सब चाहते हैं कि आप भी ये अचीव करें. So in this industry, let's look at how it compares to other industries in the world. और इस इंडस्ट्री के साथ अगर हम देखेंगे दूसरी इंडस्ट्रीज, आइए कंपेयर करते हैं. Natural food industry has over $90 billion worth of sales. नेचुरल फूड की जो इंडस्ट्री है, ये लगभग $90 बिलियन से ज्यादा की सेल्स करती है. Video gaming has over 76 billion. Movie industry has over 88 billion. The music industry has over $15 billion of sales every year. अगर हम बात करें वीडियो गेमिंग की, ये $76 बिलियन से ज्यादा की सेल करती है. मूवी इंडस्ट्री, सिनेमा जिसको हम कहते हैं, $88 बिलियन से ज्यादा की सेल है. म्यूजिक इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो ये $15 बिलियन से ज्यादा की. But hang on, there is one industry out there that completely destroys all of these industries. एक इंडस्ट्री है जो कंप्लीटली सभी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है. Relationship marketing, network marketing, which is what we are here for today, actually has sales over $200 billion every single year. और रिलेशनशिप मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, इसकी जो सेल है 190 से लेकर $200 बिलियन से के करीब है. But it's well and good talking about sales, but how much commissions are we as the networkers earning? सेल्स की बात तो अच्छी है, लेकिन एज अ नेटवर्कर हम कितना अर्न कर सकते हैं, कर रहे हैं. Approximately 50% of that figure and higher in some cases is what we as networkers can earn from these companies. 50% से ज्यादा सेल्स का हम एज अ नेटवर्कर अर्न कर सकते हैं, और कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा. So $80 billion last year was shared in commissions by these companies in this industry. और $80 बिलियन से ज्यादा शेयर हुआ है पिछले वर्ष इस We have इंडस्ट्री. over 800 people on this call, and I'm pretty sure that all of us, if not all of us, would like a small percentage of that. और 800 से ज्यादा लोग हमारे पास इस कॉल में हैं, तो मैं समझता हूं कि हम में से सभी लोगों को इसका कुछ प्रतिशत हिस्सा चाहिए. Now, a lot of people need to understand when they are on the left-hand side of the quadrant, the employee or the self-employed side of the quadrant, they, in most cases, will fit into a system like this. जितने भी लोग हैं जो लेफ्ट हैंड साइड के क्वाड्रेंट से हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, वो इस क्वाड्रेंट में फिट होंगे. Either they are top management, or they are middle management, or they are frontline employees, or they are the support staff right at the bottom. या तो वो टॉप मैनेजमेंट में होंगे, या तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होंगे, हो सकता है वो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज भी हो या सपोर्ट स्टाफ होंगे.
So I have a question for all of us to think about today. Do you really think that the CEO and someone beneath the CEO or even a support staff, do you think that support staff has even got a small chance of becoming the CEO of that company and earning that salary of the CEO? क्या आपको लगता है जो सैलरी, जो पगार सीईओ का है, वो उससे नीचे के लेवल के बंदे का या सपोर्ट स्टाफ का कभी हो सकता है? क्या कभी कोई सपोर्ट स्टाफ सीईओ के जितना सैलरी क्या कभी अर्न कर सकता है? The beauty about network marketing is we can take someone who is acting as the support staff and even the cleaner, and we can educate them with this kind of a training session, and with this kind of a training session we can make that person earn a CEO's salary. और ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक सपोर्ट स्टाफ, चाहे वो क्लीनर भी क्यों ना हो, वो यहाँ से सीख सकता है, इस सिस्टम के माध्यम से सीख सकता है और वो सीईओ के लेवल की सैलरी भी अर्न कर सकता है. So a lot of times we, throughout our careers, and I'm sure Sumit is exactly the same and he understands what I'm saying, we have been called people that promote pyramid schemes, yes? Which is the true pyramid scheme? Is it this, the corporate world, or is it what we are doing where we are empowering people to earn money? और कई बार ऐसा होता है कि हमें लोग बोलते हैं प्रमोट करने के लिए पिरामिड स्कीम को, सिस्टम को, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपके सामने है ये पिरामिड स्कीम है, या हम जो कि एम्पावर कर रहे हैं लोगों को, सशक्त कर रहे हैं लोगों को? So for those new people on this call today, or for the individuals that are questioning, why is it that I have joined Platin World? What is the reason why? सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट कि उन लोगों के लिए कि क्यों मैंने प्लैटिन वर्ल्ड ज्वाइन किया, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने प्लैटिन वर्ल्ड ज्वाइन किया? Because people, when you go out there as networkers and you promote this business, you have to give a reason as to why you have joined the company. एज ए नेटवर्कर आपको उन्हें एक रीजन देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने ज्वाइन किया इस कंपनी को. And the best way to describe it is always to focus on the 3 P's. सबसे बेस्ट वे है इसको डिस्क्राइब करने का 3 P. Okay, the first one is people. Who is the leadership and the corporate team of the company that you are promoting? क्या है वो लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट टीम उस कंपनी की? Of course, we have 𝐿𝐿𝐴. 𝐿𝐿A has now established a company 6 years ago. We are now in our 7th year. There's not a single company out there that has survived this long in the cryptocurrency sector. So would you agree that he knows what he is doing? अगर हम बात करें 𝐿𝐿A's की, तो 𝐿𝐿A's इस मार्केट में इस कंपनी को लगभग 6 वर्ष से ज्यादा से चला रहे हैं, और वो भी पूरे विश्व भर में, ना कि सिर्फ एक देश में बल्कि पूरे के पूरे विश्व भर में. क्या आपको? And you know what? Not everyone has the answers when it comes to cryptocurrency, because cryptocurrency is changing on a daily basis. And I think we can all understand and appreciate that. और सबके पास उत्तर नहीं है. क्रिप्टो करेंसी डेली बेस पे हर दिन चेंज हो रही है. The second P is the product and services that we are offering as individuals. और सेकंड है प्रोडक्ट और सर्विसेज हम एज ए इंडिविजुअल जो ऑफर कर रहे हैं. Every single person can earn money with this business by simply having a smartphone. And I think you can also agree, almost the entire world has smartphones nowadays. और ये बिजनेस ज्वाइन करना, ये सिस्टम ज्वाइन करना बहुत आसान है, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया के पास आज स्मार्टफोन है जिसको वो यूज कर रहे हैं. And how many people have you met, you know, where they have to buy stock, store the stock into a warehouse, do stock takes every single day, place a small margin on it, make sure they are not
in a situation where their prices are overinflated compared to their competition. This is extremely difficult. और आपको पता है ऐसे बिजनेसेस जहां पे आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट में कोई खामी नहीं है, आपको देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट सही तो है, ये देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट ज्यादा इन्फ्लेट ना कर जाए, मार्केट में इन्फ्लेशंस देखने पड़ते हैं और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। No doubt we respect these people, and of course there have to be people like this that exist in the world, but this system is very different. और ऐसे लोग भी हैं और हम उन्हें भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये सिस्टम ये अलग है। Why is this different? Because with a smartphone, you're downloading 2 applications, you're loading your coins into your farm, and you're good to go. और आप इस सिस्टम के साथ अपने फार्म को लेते हैं, फार्म में कॉइन लोड करते हैं और हो गया। And of course, we are all benefiting from the minting of this coin. Why not share it when you're getting paid 81% commissions from the sale of the product? This is huge. और क्यों इसे रेकमेंड ना करें जब आप इस प्रोडक्ट से 81% कमीशन अर्न कर सकते हैं। And then final P, the third P is the process, which is a system designed to make you, the person on this call, successful. और तीसरा है प्रोसेस, एक सिस्टम जो डिजाइन किया गया है आप सभी के लिए इस कॉल पे आने के लिए ताकि आप सक्सेसफुल हो। So I want to congratulate all of us on this call because you are sitting in that system. और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आप सभी इस सिस्टम में अभी बैठे हैं। So my name is Danish. I met a new prospect today. He likes the business of Platinum World. He has signed up. Fantastic. He wants to promote the business. Where do I get him started? You need to bring that person onto a call like today because we are about to go into the skills of network marketing. और मेरा नाम है दानिश और मैं अगर किसी नए व्यक्ति को मिलता हूँ और उसे मुझे समझाना है इसके बारे में तो उसे इस कॉल में इनवाइट करना पड़ेगा क्योंकि हम उसे स्किल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने वाले हैं। But before we get into that, what is very important for that person that has just joined the business is for you as their leader to ask them, what is your why? What are your goals? और सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी कोई ज्वाइन होता है शुरुआती समय पे उसको ये पूछना, उससे ये बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका वाई क्या है, क्यों और आपका गोल, आपका लक्ष्य क्या है। Sorry, carry on. Okay, then. Why are you doing this? What is it that is driving you to make or earn more money? Because a strong why helps you do whatever it takes, not just your best, but everything and whatever it takes. That's what a strong why does. और एक स्ट्रॉन्ग वाई क्या करता है, आप क्यों कर रहे हैं, क्या आपको ड्राइव करता है ये करने के लिए। और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वाई किसी व्यक्ति का हेल्प करता है उसे हर वो चीज करने में जो संभव हो सकती है। And what are your goals? Are they big enough to excite you, but at the same time small enough and realistic enough to believe in? और उससे भी महत्वपूर्ण है गोल, क्या ये इतने बड़े हैं कि आपको हमेशा एक्साइट कर सके और इतने छोटे हैं कि आप उसमें बिलीव कर सको कि ये हो सकता है। And your goals can be anything, whether you want to buy a car, whether you want to give a house to your family, whether you want people to recognize your parents as your parents. Oh, this is Sumit's parents. Sumit is very popular. He is a totally successful individual. Whatever your goal is, this company can achieve that for you. और ये गोल क्या है आपके, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने घर वालों को आपको अपने परिवार को एक घर देना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, कोई भी आपका गोल है, चाहे आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आपके नाम से जाने जाएं, आपके समाज में आपके इर्द गिर्द लोग आपके नाम से आपके माता पिता को पुकारें, आप जो भी चाहते हैं वो सभी गोल्स हैं। So make sure you break your goals down and make sure you write your goals down and look at them every single day. और मेक श्योर करें कि आप अपने गोल्स को राइट डाउन करें हर दिन।
The reason why I'm saying you need to write them down is because when you write down your dreams and your goals with a date, okay, this becomes something fixed. It becomes a goal. And then a goal that is broken down into steps becomes a plan. आप जब भी अपने ड्रीम को, अपने सपने को लिखते हैं एक डेट के साथ, वो गोल बन जाता है। और जब आपका गोल अलग अलग स्टेप्स में विभाजित होता है, अलग अलग स्टेप्स में विभाजित होता है, तो वो एक प्लान बन जाता है, वो एक रणनीति बन जाती है। And when a plan is backed up by action, there is no point in just writing these things down and not doing anything. You have to back up this plan with action because that is what makes your dreams come true. और आपको अपने प्लान को एक्शन के साथ बैकअप करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज आपको सफल बनने में मदद करेगी। Now I know most of us, if not all of us on this call, may find this next point a little bit funny, but believe me when I say this, it is an extremely important thing for you as an individual to do. ये चीज हो सकता है आपको हंसी आए इसको देख के, लेकिन एक इंडिविजुअल की हैसियत से ये करना बहुत जरूरी है। Make sure you take what we call a vision board, which is just a blank piece of paper, and stick all of what you want to achieve onto that board. और आप एक ब्लैंक बोर्ड लें और उसे विजन बोर्ड आप कह सकते हैं, और हर वो चीज जो आप अचीव करना चाहते हैं उस विजन बोर्ड में लगा दें। Because you know, when you start looking at this vision board every single day, and keep it a secret, don't tell anyone about it, put it in a place where only you can see it, in your house, in your office, wherever it is that you come and you conduct yourself in a professional environment. और इसे आप सीक्रेट रख सकते हैं, इसे आप छुपा के रख सकते हैं, और इसे आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पे ज्यादा लोग देखे ना। And you must make sure you understand that whatever the mind can process, can conceive, and believe, it will achieve. This is something we all have to understand. So if you believe that you will achieve that, it will come. जो कुछ भी आपका मन, आपका दिमाग विश्वास कर लेता है कि मैं इसे अचीव करूंगा, ये कंसीव कर लेता है, ये विश्वास कर लेता है कि मैं इसे अचीव करूंगा, और वो विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, और वो आप अपने जीवन में आकर्षित आप करते हैं और अचीव भी करते हैं। So, ladies and gentlemen, the first part of the presentation is to get your mind in the right place, to get your new prospect's mind in the right place, to say, right, why am I doing this? What are my goals? You need to check to see whether this person is really serious about the business. आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसके गोल्स हैं, आपको समझना पड़ेगा क्या वो रियली सीरियस है। And now the second part of the training is teaching us all about the 7 skills of network marketing. और सेकंड पार्ट है जो ट्रेनिंग का है, वो है सिखाना 7 स्किल्स नेटवर्क मार्केटिंग की। Without knowing these skills, without putting these skills into action, believe me, you will not become successful in this business. बिना इन स्किल्स को एक्शन में डाले हुए आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। So the first skill of network marketing, and I hope you're writing this down, is actually finding more prospects to share the opportunity with. सबसे पहली चीज है फाइंडिंग प्रॉस्पेक्ट, यानी कि प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं आशा करता हूं कि आप लिख रहे होंगे इसे। Make sure you build your contact list. आप मेक श्योर करें कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं। And you need to add people every single day. If you stop adding people to your contact list, you are drying up. और आपको हर समय हर दिन लोगों को ऐड करना पड़ेगा अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। Make sure you get to know your prospect, the person that you are presenting the opportunity. You need to know them before you present to them. आपको उस प्रोस्पेक्ट को जानना है पहले, इससे पहले कि आप उसे प्रोस्पेक्ट करें। And don't prejudge. Don't write someone's name down and then cross it out to say, I don't think this guy is going to be interested. Never do that, because that person can become your best recruiter. और कभी भी किसी को प्रीजज बिल्कुल भी ना करें,
कि हाँ ये नहीं कर पाएगा, ये इससे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा, ये व्यक्ति आपका सबसे बेहतरीन रिक्रूटर बन सकता है। And do not be afraid of rejection. If someone says, no, I'm not interested in the business, you take it as this person is not ready to join now, but they will join later. और आप बिल्कुल ना डरें रिजेक्शन से। हो सकता है ये व्यक्ति आज ना ज्वाइन करे, लेकिन आने वाले समय में ज्वाइन करेगा। And remember, ladies and gentlemen, every battle is won before it is fought by you getting to know the prospect, understanding their likes, their dislikes, creating a relationship with them, and then presenting the opportunity to them. और हर युद्ध जीतने से पहले जीता जाता है अगर आप उस प्रोस्पेक्ट को अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में उसको अच्छे से समझते हैं, तो आप वो बैटल पहले ही जीत सकते हैं। The second skill of network marketing is one of the most important skills. और दूसरी स्किल नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है, Invitation. How is it that we should invite people into the business of Platin World? कैसे हमें इनवाइट करना है लोगों को बिजनेस में प्लैटिन वर्ल्ड के। Keep it very short and brief and create curiosity and excitement when you are talking to them. और आपको सबसे पहले क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, यानी कि जिज्ञासा, और एक्साइटमेंट यानी कि जोश जुनून और जज्बा। The biggest mistake all of us make is when we are contacting a friend or another networker and we are saying, hey, I found another business. What are we doing? We are sending the PDF. We are sending YouTube videos. We are sending literally everything. You are missing the opportunity of creating excitement in the business presentation by sending this to और people. हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई नया व्यक्ति मिलता है और जिस नए व्यक्ति के साथ हम काम करना शुरू करते हैं, उसके साथ हम तुरंत कॉल करते हैं, उसे बताते हैं और उसे पीडीएफ भेज देते हैं। तो आप उस व्यक्ति के कन्वर्जन की अपॉर्चुनिटी गंवा देते हैं ये करते ही। The best way to present the opportunity is to create that curiosity. Hi, how are you doing? Listen, you know, I'm someone who doesn't join any business, but with this opportunity, I need you here at this time, at this date. You need to get there. Oh, but what is it about, Danish? Listen, come onto the call, you'll find out. और हम क्या करते हैं, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बना के रखते हैं। हम जब भी कॉल करें आप ये कह सकते हैं कि देखिए, मैं कभी भी कोई भी बिजनेस, कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं ज्वाइन करता, लेकिन ये कुछ अलग है, ये कुछ हटके है। और लोग आपसे पूछेंगे फोन पे, भाई क्या है, कैसे है, क्या है, क्यों है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको नहीं बताना है उस व्यक्ति को, और उनको बोलना कि अगर आपको जानना है आप कॉल पे आए। And if they ask you for a PDF, if they ask you for an article, if you ask you for a presentation, just say, listen, I'm not sending you anything until you come onto this call. After the call, I will send you whatever you want. आप उन्हें कह सकते हैं, अब वो पूछेंगे पीडीएफ के बारे में, वो मांगेंगे आपसे पीडीएफ, वो आपसे मांगेंगे और डेटा, लेकिन आप उन्हें कोई भी डेटा नहीं भेजते। आप उनको कह सकते हैं कि आप एक बार कॉल पे आ जाइए, उसके बाद हम आपको सारा डेटा भेज देंगे। You have no idea how many people have missed the opportunity on signing other people up because they have been sent a PDF and there is no explanation on the PDF or excitement or energy or clarity, and they lose interest straight away. You need to be there presenting to them. और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको वहां पे प्रेजेंटर होना होगा। बहुत से लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी गंवा दी, अपॉर्चुनिटी खो दी, प्रेजेंट करने की ये अपॉर्चुनिटी खो दी उस प्रोस्पेक्ट की, क्योंकि आपको वहां पे होना होगा। And what you should do is before the call, set a reminder to say, hey, you know, Rahul was going to come onto the call. I invited him earlier on this morning. Let me send him a reminder, or let me call him just today. Hey, Rahul, you're about to come onto this presentation, right? Listen, it's in 15 minutes. Make sure you're there. And straight after, I will have a call with you. And you know what? I'll bring a professional to come with me, and let's see if you have any questions that he can answer or she can answer.
और उसी के बाद आपका कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप राहुल को कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल राहुल को, कि राहुल, हम इसके बाद स्ट्रेट अवे कॉल करेंगे, और आप चाहेंगे तो मैं एक प्रोफेशनल को भी उस कॉल में इनवाइट कर सकता हूं, और हम देखते हैं कि क्या हमसे बन सकता है। And who is that professional? You must be wondering. Very simply, it's your upline. Bring the upline onto the call. Get assistance from your uplines or your business partners to close your business. This is very powerful. और इसी के साथ साथ आप अपने अप्लाई, और आप सोच रहे होंगे ये प्रोफेशनल कौन है, ये एक्सपर्ट कौन है। ये एक्सपर्ट, ये प्रोफेशनल आपका अपलाइन है, आपके स्पॉन्सर हैं, जो कि आपको गाइड करेंगे और इसी के साथ आपकी हेल्प करेंगे एज अ थर्ड पार्टी। Which brings me to my next very important point, and that is, we call it in English, edification. What is edification? और इसी के साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है एडिफिकेशन। क्या है एडिफिकेशन? Edification simply means adding value to your upline or business partner. Because when you are sitting with your prospect, that prospect needs to have a bridge of respect between him or her and the upline. और कैन यू रिपीट प्लीज? So when it comes to edification, edification means adding value. I must add value to my upline so that the prospect can see, wow, this guy is so great, I need to follow him. और क्या करता है एडिफिकेशन? वो ब्रिज है जहां पे वो वैल्यू क्रिएट करता है प्रोस्पेक्ट की और अपलाइन की। और वो जो एडिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक प्रोस्पेक्ट सोचता है हाँ ये व्यक्ति बहुत शानदार है और मुझे इससे फॉलो करना बहुत जरूरी है। Let me give you an example of edification. और आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एडिफिकेशन का। So I bring Rajendra, who is my upline, for example, into the room with my prospect. मैं राजेंद्र को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, जो कि मेरे अपलाइन है इस कॉल में। And the first way I'm going to talk about Rajendra to my prospect who's just about to join the business is, this is Rajendra. He's an all right guy. You know, he's been in the business lagbhag, I don't know, 2 years or something like that. And he's doing okay. Listen to what he has to say. और मैं राजेंद्र को आइडेंटिफाई करता हूँ, इंट्रोडक्ट करता हूँ ऐसे कि ये राजेंद्र जी हैं, ये हैं, 2 साल से बिजनेस में हैं। अच्छा आपको Option number 2. This is Rajendra. He has raised over hundreds of millions of euros in this business. You and me can only dream about these figures. I have listened to this guy, and this is the reason why I am on the path to success. My brother, my sister, you need to listen to what this person says, because he is very, very important to me and you at this point in time in our lives, because this guy's advice is going to make us successful. और दूसरा ऑप्शन नंबर 2, ये राजेंद्र हैं और इन्होंने सैकड़ों मिलियन यूरोस के बिजनेस को खड़ा किया है, और आप और हम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने इसे लिविंग रियलिटी बनाया है। और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा सफल है अपने जीवन में, और आपको और हमें इनसे सुनना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। And I'm pretty sure when you look at the 2 different examples of edification, you will always be more attracted to the second, where you are coming with energy and explaining to that prospect that this guy is someone we really need to pay attention to. और इसी के साथ जब आप ये कहते हैं, तब व्यक्ति ये रियलाइज करता है और अपने अंदर रियलाइज करता है कि ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है। So this, ladies and gentlemen, is called edification. और इसे कहते हैं एडिफिकेशन। Right, let's move on to our third skill of network marketing, and that is the presentation. और आइए थर्ड स्किल पे चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, वो है प्रेजेंटेशन। Don't do it in an office.
Make sure you choose a neutral location where the prospect is not, busy with something else, and you can focus on the prospect as well. और ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप किसी ऑफिस में प्रेजेंट आप किसी के ऑफिस में प्रेजेंटेशन ना करें, क्योंकि ऑफिस में प्रेजेंटेशन करने पे वो व्यक्ति अपने में उलझा होता है, अपने में व्यस्त होता है। और ये ट्राई करें कि बीच के किसी लोकेशन पे आप मीटिंग करें। And make sure you dress professionally. Please do not wear shorts and a t-shirt with slippers and come to a presentation, because you need to show the prospect the success that you are achieving in the business. और गलती से भी शॉर्ट्स, चप्पल, स्लीपर्स या अपने घर के कपड़े ना पहने। प्रोफेशनली आपको ड्रेस करना है, क्योंकि आपको उस प्रोस्पेक्ट को वो सफलता दिखानी है जो आपने अपने बिजनेस से अचीव की है। Make sure you switch off your phone. Too many people have got their phones on, answering their phone calls in front of the prospect. This is extremely, extremely rude, and it is not professional. और मेक श्योर करें कि आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, वो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने एक कॉल उठाते हैं और ये बहुत ही रूड है और ये अनप्रोफेशनल है। Mention to the prospect, it's going to take between 30 to 45 minutes for me to present the opportunity to you. Because what happens is sometimes prospects are told, come for a presentation, they only have 10 minutes and they have not heard the full presentation. You must make sure you mention the presentation takes this much amount of time. और आप मेक श्योर करें कि प्रेजेंटेशन लगभग 30 से 45 मिनट का लगेगा, क्योंकि जब कभी कभी प्रोस्पेक्ट आते हैं उनके पास सिर्फ 10 मिनट होता है और 10 मिनट में वो पूरी प्रेजेंटेशन सुन भी नहीं पाते हैं। And make sure there's no negativity throughout the presentation. और ध्यान रखें कि कोई भी नकारात्मकता ना हो पूरे प्रेजेंटेशन के बीच। Now, I'm going to make sure that we all understand as leaders that when you sign up your prospect for the first time, it is very, very important to duplicate yourself into that prospect. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को डुप्लीकेट करें प्रोस्पेक्ट में। The first thing you need to do is teach them how to present the opportunity. सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो है प्रेजेंट करनी है अपॉर्चुनिटी को। So you as an individual and your prospect as an individual must sit down together and you need to show the prospect how to present the opportunity. और आपको बैठना पड़ेगा आपके प्रोस्पेक्ट के साथ और उसको बताना पड़ेगा कि कैसे अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट किया जाए। After that, you need to give the prospect a chance one-to-one on presenting the opportunity to you as a practice. और आप उसे चांस दें 1-to-1 ताकि आप उसे प्रेजेंट कर पाए अपॉर्चुनिटी। Then you tell the prospect, hey, Mr. Prospect, go and fetch your prospects as well. Tell your people to come. I will present in front of people now and you watch me present. और अब आप जाएं, आप प्रेजेंट करें, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे 1-to-1, अब आपको प्रेजेंटेशन दे पाए और उसके बाद आप उन्हें कहें कि अब आप जाएं, आप प्रोस्पेक्ट फाइंड करें और मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन करूंगा। Now the tables have turned. Now what will happen is the second group of prospects, you tell your junior, your downline to say, now it is your turn to present and I will be there to guide you just in case there are any mistakes or anything like that. और सेकंड स्टेज में आप उन्हें कह सकते हैं कि अब आप प्रेजेंटेशन करो, मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपको गाइड करूंगा अगर कोई भी गलती होती And है you आपसे। take the prospect to the side, say, congratulations, you did a fantastic presentation, but a few points. This point, and I felt that this point you were speaking too fast. Slow it down a little bit. और आप उस व्यक्ति को साइड में ले जाएं और उसे कहें आपने बहुत फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन की, लेकिन उनमें कुछ चीजें हैं जिसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा और आप इसे करेक्ट कर लें। इस चीज में आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, इसमें थोड़ा स्लो जाएं। Finally, you can let your prospect fly free like a bird. That prospect can now conduct their own presentations. Congratulations, you're a leader. You have taught them how to present the opportunity. और इसी के साथ साथ आप उस प्रोस्पेक्ट को सिखाते हैं कि कैसे आप बर्ड की तरह, चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं
और कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपने उसे सिखा दिया है। Let's move on to the fourth skill of network marketing. आइए चलते हैं चौथी स्किल नेटवर्क मार्केटिंग में। This is the skill that most people get wrong. ये वो स्किल है जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलत हो जाते हैं। They do the best presentation. The best, information and knowledge is given to the prospect. Okay, they dressed smart. They looked so good, but they missed out on one key point. वो अच्छे लगते हैं, वो अच्छे ड्रेस होते हैं, बहुत स्मार्टली ड्रेस होते हैं, सारी चीजें अच्छी होती है, लेकिन वो एक पॉइंट मिस कर देते हैं। And that is how to close the prospect. कैसे प्रॉस्पेक्ट को क्लोज किया जाए। What you need to do is you need to go into consultation mode. You need to become a consultant for this prospect. और आपको कंसल्टेशन मोड में जाना पड़ेगा, आपको एक कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। You need to make sure this business comes into your organization. So how do we do this? आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए, और कैसे हम ये कर सकते हैं? Few ways. The first way is to ask them on a scale of 1 to 10. Hey Rahul, out of 1 to 10, how likely are you to join this business? Explain to me. और आप उन्हें पूछ सकते हैं, राहुल, अगर मैं आपको बोलूं 1 से 10 के स्केल में, किस स्केल में आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे? You can also ask them the very, very popular and very, very good 3 questions straight after the webinar as well. और आप उन्हें बहुत पॉपुलर ये 3 प्रश्न स्ट्रेट आफ्टर वेबिनार या कॉल पूछ सकते हैं। Hey Rahul, what did you like the most out of the presentation? राहुल, वो कौन सी चीज थी जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई इस प्रेजेंट? Are there any issues, okay, that I can help you resolve from my end, or any questions that I can help you resolve from my end? और क्या ऐसे कोई इश्यूज हैं या ऐसे कोई प्रश्न है जो मैं अपने एंड से रिजॉल्व कर सकता हूं? Okay, cool. Rahul, so seeing that all the questions are answered, seeing you've told me what you like the most, when can we start? अब जब सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं, जब सारे इशू रिजॉल्व हो गए हैं, कब हम शुरुआत कर सकते हैं? Can you see how these are closed questions? These are questions that are heading towards an answer. You are not saying if you would like to join the business. You are saying when would you like to join the business? और आप ये नहीं कह रहे कि क्या आपको बिजनेस ज्वाइन करना है, आप उनसे पूछ रहे हैं कि कब आपको बिजनेस ज्वाइन करना। Exactly. So this is how we utilize skills on closing people, because it's well and good you learning the presentation, but you have to close the business. The business needs to come into your organization. This is an art. This is something you need to perfect, and the best way to do it is these 3 questions. और ये एक आर्ट है, और सबसे बेहतरीन तरीका है इन तीनों को करना। Because you are opening up the prospect and asking him very openly, these questions that are very important to bring people into the business. और आप उस व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चंस, ये प्रश्न उनसे किए जाएं। The 5th skill of network marketing is following up. 5वीं स्किल जो नेटवर्क मार्केटिंग की है वो है फॉलोइंग अप। This is again something that people miss out on, because we are continuously prospecting. We are forgetting how many people we are bringing into the business or leaving on the side after a presentation. और हम भूलते जा रहे हैं कि हम कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और फॉलो अप नहीं कर पा रहे उस वजह से। And what we need to do in this business is we need to give the prospect a little bit of time to think about it if you have not yet closed them. And that time should be no more than 72 hours, which is 3 days. और ये समय 24 से लेके 72 घंटे यानी कि 3 दिन के भीतर का होना चाहिए। And make sure every time you do a presentation, if the prospect has not yet decided, always set a date and a time for the next meeting. और अगर प्रॉस्पेक्ट ने डिसाइड नहीं किया है तो हमेशा आप डेट और टाइम ये डिसाइड करके रखें।
Because when you fix a date and a time, that prospect knows they are committing to something. So they need to make a decision instead of, let's say, for example, forgetting about it or going quiet. Repeat, please. So when you set a date and a time, the prospect knows mentally that they have to commit to something and they know you are serious about the business. डेट और टाइम सेट करने की क्यों जरूरत है? ताकि प्रोस्पेक्ट एक डेट को कमिट करे और आप वो समझ पाए कि आप सीरियस हैं. And that is the point where you send them further material like PDFs, like YouTube videos, like calls like this. Only then do you share material with them, but don't share the material to them. और उसी के बाद आप उसे पीडीएफ मटेरियल सब कुछ बाद में भेजें, प्रेजेंटेशन से पहले नहीं. And remember, guys, if the prospect says no, make sure you have a list in your diary where it says not now and write that person's name in if they're not interested in the joining business. And I'll tell you why. और अगर कोई नो कहे तो आप अपनी डायरी की एक लिस्ट बनाएं और उसमें लिखे नॉट नाउ. Because those individuals have not yet fully understood the business, and you need to tell them or ask them at the meeting point when they said no the following question. और अगर उन्होंने अभी के लिए मना किया है तो आप उनसे ये फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. That question is, Mr. Rahul, no problem, you don't want to join the business now, but would it be okay for me to continuously update you on the progression of the business and how well it is doing as time goes by? और आप उनसे पूछ सकते हैं कि मिस्टर राहुल, हो सकता है कि अभी आपको बिजनेस ज्वाइन नहीं करना हो, लेकिन क्या इस बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए मैं आपको अपडेट कर सकता हूं? And of course, no prospect is going to say no to you kindly updating them. So make sure you put them on that not now list, because eventually, when they see the success of this company growing, they will join the business. कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा. अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो नहीं करेगा, और वो जरूर देखना चाहेगा अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है तो. The sixth skill of network marketing is promoting webinars and events. और छठा, प्रमोट करना है वेबिनार्स को और इवेंट्स को. And why it's important is because we as network marketeers have to promote and build our businesses from event to event. और हमें एज ए नेटवर्क मार्केटर हमारे बिजनेस को इवेंट टू इवेंट प्रमोट करना है. You ask any of the top leaders that you as Team India are blessed with, they will tell you how powerful it is to come to an event. और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इंडिया में आप किसी भी लीडर को पूछेंगे और वो आपको बताएंगे कि कितना शक्तिशाली है एक इवेंट में आना और उसे अटेंड करना. So make sure you are the first one that commits to an event. You are the first one that goes to their team and makes it a culture for them to must attend the event. और आप मेक श्योर करें कि आप सबसे वो पहले व्यक्ति हैं जो इवेंट में जा रहे हैं और एक कल्चर बना रहे हैं इवेंट्स का और ट्रेनिंग्स का. And make sure you always grow your number. So let's say, for example, you managed to bring 10, 20 people from your team this time. Next time, double it, triple it, because events change lives. और हमेशा ध्यान रखिए कि आप जितने भी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हमेशा वो नंबर इवेंट दर इवेंट बढ़ने चाहिए. अगर 10 हैं तो 20 होने चाहिए, 20 हैं तो 40 होने चाहिए. इवेंट दर इवेंट वो 2 गुना या उससे ज्यादा बढ़ने चाहिए. The seventh skill of network marketing, and finally the last skill, is duplication. 7वीं स्किल नेटवर्क मार्केटिंग की और लास्ट स्किल है डुप्लीकेशन. You have to make sure that whatever it is that you know that's inside of this head of yours between your ears, you have to duplicate that into every single downline or business partner that you have in order for you to become successful. और जो भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो भी आपके पास है, जो भी आप समझना चाहते हैं,
ये आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा जो आपके यहाँ पे है, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक डाउनलाइन के साथ। Can you imagine how powerful your team would be, or Sumit's team would be, if he had 1,000 or 10,000 exactly the same as Sumit, same mustache, same beard, same everything? Imagine that. Imagine how powerful that would be, ladies and gentlemen. जस्ट इमेजिन करें, आप ही के जैसे व्यक्ति अगर आपकी टीम में 1,000 या 10,000 हो, जिसकी सेम मूछें हो, सेम दाढ़ी हो, सेम शक्ल हो और सेम दिमाग हो, तो कितना पावरफुल, कितना शक्तिशाली होगा वो। I don't know about you, but I'd be very excited if I had a team like that. मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होऊंगा अगर मेरे पास वैसी टीम हुई तो। So, ladies and gentlemen, those are the 7 skills of network marketing. You need to teach these to the new people or even the existing people in your teams and go through it with them one by one. और ये 7 स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग की, जो आपको उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझानी है। Now, there's a few golden nuggets, very important points, extra advice that we would like to give to you before we end off the call. एक एक्स्ट्रा एडवाइस है इस कॉल के अंत से पहले जो हम आपको देना चाहते हैं। Where is this advice coming from? This, guys, is coming from years and years of experience. We are condensing it. We are putting it all into one presentation for you. और हम ये एडवाइस कहाँ से ला रहे हैं? ये सालों साल के एक्सपीरियंस से है, हम इसको कंडेंस करके आपको देना चाहते हैं। What are the 5 reasons you did not manage to sign up your prospect? क्या है वो 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिस वजह से आप अपने प्रोस्पेक्ट को साइन अप नहीं कर पाए? And these reasons you must make sure you understand because you need to avoid them. आप ध्यान रखें कि आपको ये रीजन पता होना चाहिए ताकि आप अवॉइड कर पाए इन रीजंस को। Number 1, you did not get to know them before the presentation. You didn't understand who they were. आप समझ नहीं पाए उन व्यक्ति को, आप समझ ही नहीं पाए वो कौन थे। Number 2, you failed to follow up with them. You did not call them. You were scared to say, oh, I don't know. What if he says no? How will I take it? आप डर में रह गए कि क्या होगा अगर मैं कॉल करूंगा, क्या होगा अगर कॉल आएगा तो। Number 3, you assume they would not be interested. You assume these things. You say to yourself, maybe that guy is not interested. Let me not follow up. हो सकता है कि आपने खुद ही से सोच लिया हो कि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं होगा, मैं फॉलो अप नहीं करता। Number 4, you overinflated the opportunity or the product. You went to that person, you said, you will get rich. I guarantee you this, I guarantee you that. This is not the way you promote this business. हो सकता है आपने ओवर इन्फ्लेट कर दिया हो, आपने बोल दिया होगा मैं आप सफलता की गारंटी लेता हूं, मैं आपको सशक्त करता हूं, और कुछ ज्यादा हद से। It's very important that we need to be realistic when we are presenting as professional network marketers. और आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेजेंट करते हैं। And then the 5th and final reason why you may not have gotten a sign up is because you made it about yourself instead of the prospect. So let me explain, Sumit. For example, I'm in a presentation and I am just talking about my success. Oh, I've bought this car, I've bought this house, I've done this, I've done. What are you doing? Make the opportunity about the prospect. Tell Rahul, hey Rahul, this opportunity has changed my life, but forget about me. I want it to change your life. It's all about the prospect. और आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग जैसे ही जाते हैं वो अपने बारे में, अपनी सफलता के बारे में, मैंने ये घर ले लिया, मैंने वो गाड़ी ले ली, मैंने एक्स ले लिया, मैंने वाई ले लिया, और अपने बारे में ही ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन बात आपको इस प्रकार से करनी है कि देखो राहुल, मैंने ये कर लिया, वो ठीक है, उसको भूल जाओ, अब आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करते हैं। Brilliant. Now, let me give you another golden nugget, ladies and gentlemen, and that is success loves speed. आइए एक आपको और सुनहरा नगेट देते हैं, वो है सफलता
ओके, स्पीड। सफलता को तेजी पसंद है। Beautiful, well translated. All right. Why am I saying this, guys? Because it's very important while we are in this 90 game plan, we really create urgency in our और हम business. क्यों 90 दिन के गेम प्लान में हैं? क्योंकि हम अर्जेंसी क्रिएट कर पाए, स्पीड क्रिएट। Let me give you an example of two different types of recruiters. मैं आपको एग्जांपल देता हूं दो अलग अलग प्रकार के रिक्रूटर्स के। We have the slow and steady tortoise. I don't know how you're going to translate that in Hindi, bro. हमारे पास एक धीमी गति का कछुआ है। This person recruits one person every single month for a period of 12 months. और ये व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को रेकमेंड करता है 12 महीने तक, हर महीना। And he trains every single one that he recruits once a month. Every single day he is training these people. So he has very well trained recruits. और ये व्यक्ति हर महीने एक एक को रेकमेंड करता है, तो इसके पास ट्रेंड रिक्रूट्स हैं। So total, if he is only recruiting one person a month for 12 months, he's got 12 new direct sponsors. और अगर ये सिर्फ एक व्यक्ति को रेकमेंड करता है तो इसको 12 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स मिलते हैं। And let's be honest, only 80% of them will stay behind in the business. 20% will leave. और 80% लोग ही उसके साथ रहेंगे और 20% छोड़ देंगे। So this means he has only signed up 9 new direct sponsors in the entire year. इसका मतलब सिर्फ उसने 9 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स किए हैं और पूरे वर्ष में। Now let's compare this guy or girl to the rabbit recruiter, the tortoise recruiter to the rabbit recruiter. Let's see how fast this guy is. और आइए एक दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं जो बहुत फास्ट करता है, जो खरगोश की तरह है। हम कंपेयर करेंगे कछुए की चाल और खरगोश की चाल को। This person recruits 20 new direct sponsors every single month for 12 months. और ये व्यक्ति 20 नए लोगों को रेकमेंड करता है हर महीने, अगले 12 महीने। Why is he doing this? Why is she doing this? Because they're excited. They want energy into their system. They are so keen. They are so desperate to make people successful within this business of Platin World. So they are running continuously every day. और यहाँ पे इन लोगों को उस व्यक्ति को लोगों को सफल बनाना है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली बिजनेस कर रहा है हर दिन। If they are recruiting 20 people every month for 12 months, this means they will have 240 direct recruits in 12 months. और इसका मतलब वो अगले 12 महीने में 240 डायरेक्ट रिक्रूट्स करेगा। And if 60% of those recruits stay behind, that will leave this person with 144 new team members throughout the year. और अगर सिर्फ और सिर्फ 60% लोग स्टे बैक करते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे 144 डायरेक्ट लोग होंगे जो उसके डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे। And this person educates these people, has established a system of support and brings them onto calls like this call. और ये व्यक्ति रिक्रूट करता है और डायरेक्ट उन्हें इन कॉल्स में लेके आता है, इन सभी व्यक्ति। And when they bring those kinds of people into these kinds of calls, that is how this rabbit recruiter becomes a success. Because next thing you know, 144 well-trained individuals have gone and they are starting to promote the business, and this guy has 20,000, 30,000, 40,000 people in their network. और जिस प्रकार से अपलाइन काम करेगा, उसी प्रकार से जो पूरी टीम है वो उसी प्रकार से काम करेगी, उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। और जब वो इतने सारे डायरेक्ट रिक्रूट्स करेगा तो उसकी टीम में भी हजारों, 10,000, सैकड़ों हजारों लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। So, ladies and gentlemen, speed, urgency, energy,
in your business, in the way you talk, the way you present, always wins at the end of the day. और स्पीड ऑफ एनर्जी, जैसे आप बात करते हैं, जैसे आप अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है. This is the reason as to why we say success loves speed in network marketing. और इसीलिए हम कहते हैं कि सफलता को तेज गति बहुत पसंद है. And my final point before I end off this presentation is the following. सबसे फाइनल चीज मैं इस प्रेजेंटेशन के अंत में कहना चाहूंगा वो है फॉलोइंग. When you sign someone up, or when you see someone in your business is bringing another person into your network and they want to become a networker, you need to make sure you take responsibility and initiative for that individual. और जब कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, आपकी टीम में, आपके समुदाय में, तो आप इनिशिएटिव लें उन्हें आगे बढ़ाने का. Because that person's success is your responsibility. क्योंकि उस व्यक्ति की सफलता आपकी जिम्मेदारी है. You know, a lot of the times in this business, sometimes people will look at this business and it's too much for them to handle. Oh, Danish, you are teaching us too much. It's too difficult. It's too this. What if I fail? अब कुछ लोग कहेंगे, दानिश ये बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा, क्या हो कि अगर मैं फेल हो जाऊं. And I will say to that person, my brother, my sister, my uncle, my auntie, my dada, my daddy, whatever it is they are to me, what if you fly? और मैं इसे चेंज करके कहता हूं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो कोई भी हो, मैं उन्हें कहता हूं क्या हो कि अगर आप फ्लाई करो. So this is what I want to do. I want to end off on a very positive note to say every single one of you that are on this call today, we believe in you. और हर व्यक्ति जो यहाँ पे है अभी तक, हम आप में बिलीव करते हैं. You have stayed all the way to the end of this presentation, which roughly has taken us 1 hour. So I congratulate you as well. और आप यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में अभी तक हैं, जिस प्रेजेंटेशन को 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है. But the reality is we have only finished the first step. We have still got another 2 more presentations to do, which is tomorrow and the day after at the same time. और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ पहली प्रेजेंटेशन थी. अब हमारे पास 2 और प्रेजेंटेशंस हैं जो कि कल और परसों के दिन है. So if you want to become a well-rounded networker, a professional networker, someone who does things correctly, come to tomorrow's call. और अगर आपको एक वेल राउंड नेटवर्कर बनना है तो कल के दिन, कल के कॉल पे जरूर आए. And make sure you do one thing. और मेक श्योर करें कि आप एक चीज जरूर करें. Bring your entire teams that did not come today. और आपकी पूरी टीमों को निमंत्रित करें जो आज नहीं आई. Because at the end of the day, when they are missing this kind of advice, believe me, they will not achieve the success you need them to achieve. और अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो वो उस सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं कि वो करें. Because in this business, you have to build leaders. People think, no, I'll bring volume. No, you need to build leaders first. सब इस बिजनेस में आपको लीडर्स को बिल्ड करना है. कुछ लोग सोचते हैं नहीं मैं वॉल्यूम ले आऊंगा, मैं टर्नओवर ले आऊंगा, लेकिन इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लीडर्स बिल्ड करें. If someone goes out there and they sign up, let's say for example 5, 10 different 100,000 packages,